हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टारगेट है एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मेन 2026 के क्वेश्चन एंड उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना। बिफोर स्टार्टिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर फार्मूला चार्ट ऑल्सो आई प्लेस इन द चैनल, तो उसको रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 21 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया है। देयर आर द टू स्टेटमेंट. The statement 1, when the electric discharge is passed through the gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociate and the energetic excited hydrogen atom produce electromagnetic radiation of discrete frequency. Yes, it's a right statement based on the particle theory. And second question is, second statement is given, the frequency of the second line of Balmer series obtained from the helium plus is equal to first line of Lehman series obtained from the hydrogen. Balmer is ground state, N1 is 2 and N2 should be is equal to 4 because 2 to 3 is the first line and 2 to 4 is the second line. They asked about the second line for the helium plus. And now Lehman, they have asked for the first line. So here the N1 is 1 and N2 is 2 for the hydrogen atom. So we will apply the formula and check it whether this statement is right or not. So 1 by lambda would be is equal to RH 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square into Z square. Z is atomic number. So 1 by lambda for helium plus is RH 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square and 2 square. Atomic number of helium is 2. For hydrogen, it is RH 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square into 1 square. Since we know that energy should be is equal to hc by lambda or h mu, so frequency is inversely proportional to the lambda. जो lambda का रेशो आएगा उसको रिवर्स कर देंगे तो frequency का रेशो हो जाएगा. But they said कि this should be the equal. So let's check it whether these are equal or not. Divide किया, RH cancel. Here we will get 16 minus 4 divide by 16 into 4. In denominator we will get it 4 minus 1 upon 4 and that should be 2 square. 4 cancel. Here we will get the 12 by 16 into 4 divide by 3. This is also 3 by 4. Okay, so 4 cancel, 3 cancel, answer is 1 is to 1. So if the wavelength are same, the frequency is also same, so statement 2 is right. So your first answer 1 and 2 both are right. Easy question ही था. Let's move to the next question. Second question 21 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया है. Consider the following spectrum line of hydrogen atom. First line for Paschen, second for Balmer, third for Paschen, fourth for bracket. Now correct arrangement in ascending order of energy. So energy we should know hc by lambda. So wherever the lambda is minimum, energy should be the maximum. So Paschen series N1 is 3 and N2 is 4. First line they have asked. Balmer में N1 2 हो गया, second line पूछा है तो next पे जाएंगे 2 to 3 and 3 to 4. Paschen third line N1 is 3. So 3 to 4 is first line, fifth is second line and this is the third line. So N2 should be is equal to 6. Bracket N1 is 4, N2 is fourth line they ask. So 4 to 5, then 4 to 6, 4 to 7 and 4 to 8. This is the fourth line. This is first line, second line, third line and fourth line. So either this way or that way what we can apply, energy should be is equal to minus 13.6 Z square by N square. We will check it. If the denominator is bigger, that energy will be smaller. So denominator is bigger for this case, so D should be on the last. Then after that we can get it for the A and then C and then B. So your answer should be 2. We have question number 3, 22nd January, shift 1. Energy required by electron present in first Bohr orbit of hydrogen atom to be excited to the second Bohr orbit in joules per mole. And they have given here the erg change. Okay, so energy we know that it's minus RH upon N square.
So RH value already they have given minus 2.18, 10 to power minus 11 arg, and since first Bohr orbit, so 1 is square. So E1 we will get it minus 2.18, 10 to power minus 11. Similarly, calculate for E2. You can do it 2.18, 10 to power minus 11, and since second energy level, so 2 is square. So on calculation you are getting around 0.545, 10 to power minus 11. So when we are taking the delta E, that is E2 minus E1, because they have asked about the energy required, so change obviously we need to calculate. When we are finding the change for this, 10 to power minus 11 minus 2.18, 10 to power minus 11. You can take the 10 to power minus 11 is outside, and after calculation you will get 1.635, 10 to power minus 11 erg. Now since energy need to be converted into the joules per mole, so this is the erg per atom we got it, or per electron we got it. So we know that 1 erg is equal to 10 to power minus 7 joules. So 1.635, 10 to power minus 18 joules per atom we will get it. Since we have to find out the mole, so 1 mole would be is equal to Avogadro number of atoms. So we will divide into 10 to power minus 18. So that is joules, and in place of atom we will write 1 by Na moles. So on calculation, that 1.635, 10 to power minus 18 into Na. Na means 6.022, 10 to power 23. So you will get it the answer 9.846, 10 to power 5 joules per mole. That should be answer. So we are matching with the 4 option. We have question 4, 22nd January, shift 2. Energy of first Balmer line of hydrogen is X and the second Balmer line. First Balmer line means the base line is 2 and N2 should be is equal to 3. For the second line, N1 is 2 and N2 should be equal to 4, because 2 to 3 is the first line and 2 to 4 is the second line. So we have to find out the energy. So energy formula we know that. So here the energy is RH 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So we can put the value that RH 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square for the first line. So we will get it RH 1 by 4 minus 1 by 9. So here we get it 5 by 36 RH. This is the first energy when the electron is jumping from base label to the next label, means 2 to 3. And that value they have given, it's a x kilojoule, means this value is x. So x value is 5 by 36 RH, we got it. Now we have to move ahead. Here the energy E2 is RH 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square. And that should be is equal to RH 1 by 4 minus 1 by 16. So on solving we got it 3 by 16 RH. So now in the option everything is given in terms of x. So what we have to do, we have to make the connection between this and that. So x value should be is equal to 5 by 36 RH. So RH value is 36x by 5, which I am going to put into this equation. So E2 should be is equal to 3 by 36, 3 by 16, 36x by 5. So we can cancel it out by 4 and we get answer 27 by 20x, which is around 1.35x. So your approximate answer is matching with A, 1.35x. तो क्वेश्चन ईजी था, बस छोटा सा कैलकुलेशन था एंड फाइनली वी गॉट द आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. n इक्वल टू 5 and m इक्वल टू -1. So we know that L equal to 0 per symbol is S, 1 per it's P, 2 per it's D and 3 per it's F. And here m possible values are 0, here -1, 0 plus 1, here -2, 2 plus 2 and here -3, 2 plus 3. Since they have given here the m equal to -1 means they are talking about this one, that one. So fifth is a main energy label, so it's be 5p. And -1 can hold only maximum 2 electron, clockwise and anti-clockwise. So this must have the 2 maximum electron. Now we have 3 and L equal to 2. L equal to 2 means D, so it should be the 3D.
and m equal to -1. So here we are getting -2, -1, 0, +1 and +2. We have a 5 degenerated orbital, and +½ means any one electron can be there. So in -1 side only one electron is possible, which can show the clockwise rotation. So this must have the 1 electron maximum. So maximum number of electron having quantum number A having the 2 and B having the 1. So your answer should be 2 and 1, but in the option it's not matching. So here it must need a correction in the third option, that should be the 2, 1. Question number 6, 23rd January shift 1 में पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट. सो 2.18 10⁻18 जूल फॉर द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द 2.18 माइनस 2.18 10⁻18 z square by n square joules per atom. So if we are checking the option 1, so here the z should be is equal to 2, we'll put the 2, and second orbit is also 2, 2.18 10⁻18. So your answer will be as it is. So E should be is equal to minus 2.18 10⁻18. So for the binding electron it should be negative, not positive, so first is wrong. Now let's check the second one. So here energy should be is equal to minus 2.18 10⁻18. Lithium is 3 square by 3 square. Oh, this is coming negative, so that could be the right one. Let's move to the next one. 1.08 for the second orbit of hydrogen. तो इसके लिए हो जाएगा थर्ड वाले के लिए minus 2.18 10⁻18 second orbit. So 1 square by 2 square. So when we are solving this, we are getting the 0.545 10⁻18 joule, which was wrong. So this is wrong. Now let's move the fourth one. Here the first orbit of helium. Okay, again value is given positive, which is not right. So your answer is coming, that is the lithium plus 2 is showing the right answer. Let's do the 7 number. 23rd January shift 2 को पूछा गया है work function of two metal Ma and Mb are in 1:2 ratio with photon of 6 electron volt. Kinetic energy are in ratio 2.64:1. Then work function R. So we know the Einstein equation at E should be is equal to work function plus kinetic energy. We have to find out the work function for Ma and Mb. So kinetic energy for A should be is equal to E minus W naught, and kinetic energy for B is E minus W naught for B. So here this is 6 electron volt, means energy is given 6 and the work function is W naught, and here it should be x minus 2 W naught because 1:2 ratio is given for the work function. So let's divide. So this ratio is given 2.642 kinetic energy ratio, 2.642 by 1, which is equal to 6 minus W naught upon 6 minus 2 W naught. Do the cross multiply and get the answer. So we get it 6 minus W naught, 2.642, 6 minus 2 W naught, 15.852. So on solving we got it 2.3, and here that double of this 4.6. So your answer should be 2. तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन ही है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम कैलकुलेशन में लग सकता है. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8 23 जनवरी में शिफ्ट 2 पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो नोटेशन 24 Mg12 रिप्रेजेंट 24 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. ये गलत हो गया. मैग्नीशियम सिंबल इज 12 एंड 24, तो 12 प्रोटॉन है and neutron, this is the atomic mass, and atomic mass is proton plus neutron. तो 24 is equal to 12 plus neutron. न्यूट्रॉन भी कितने आ गए हैं 12, तो पहला गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन. ओके, बी सी डी में ए ऑप्शन दिया हुआ है. सेकंड चेक कर लेते हैं. ओके, एनर्जी का चेक करते हैं 300 एंड 900 का, बिकॉज एनर्जी शुड बी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा. सो बेसिकली इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा. सो E1 by E2
this should be equal to lambda 2 by lambda 1. So lambda 2 value is 300 and this is 900. So your answer should be 1 by 3, but they have given 3:1, which is wrong answer. It should be the 1 by 3. तो A and C. So as of now A and C आंसर हो गया. फिर भी चेक कर लेते हैं. Other option, the wavelength of radiation of frequency is this, that. So frequency should be is equal to C by lambda. So when you are putting mu is equal to 4.5 10 to power 15 and this is 3 into 10 to power 8 divide by lambda. So lambda you are getting around 3 by 4.5 10 to power 8 minus 15. So approximate value is coming. So that is right. So your answer should be 3. क्वेश्चन नंबर 9 जनवरी शिफ्ट 1 में आया है. तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं है, वो कहना चाहते हैं एल स्टैंड फॉर द लेमन सीरीज़ जिसमें एनर्जी मिनिमम है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और बी स्टैंड फॉर द बार्मर विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द मिनिमम एनर्जी. सो L1 इज़ द x टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ B1. सो वैल्यू ऑफ द x इंटू 10 to power -1. तो अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए मीन्स हाईएस्ट वेवलेंथ होना चाहिए. सो लेमन सीरीज़ के लिए N1 1 है तो N2 कितना हो जाएगा 2, मिनिमम एनर्जी गैप. हियर द N1 इज़ 2 एंड N2 शुड बी इज इक्वल टू 3, मिनिमम एनर्जी गैप. तो इनका एनर्जी रेशियो निकाल लेते हैं. सो एनर्जी फॉर दिस इज़ इक्वल टू RH 1/1 square minus 1/2 square. दिस इज़ फॉर लेमन L1 एंड एनर्जी यहाँ B1 के लिए निकाल लेते हैं. RH 1/2 square minus 1/3 square. So let's say this is equation number 1, this is equation number 2. Divide both the equation because they are asking the x times of energy. Energy of L1 upon energy of B1 would be is equal to RH 1 square minus 1/2 square, RH 1/2 square minus 1/3 square. Solve this, this is cancel and we will get it. This become 3 by 4 and here it's become 9 minus 4 by 9 into 4. 4 is getting cancelled. So we will get it 3 by into 9 by 5. So we got it 27 by 5. 27 by 5 is a 5.4. Since the question been asked x into 10 to power -1, so when we are writing this 54 into 10 to power -1. So your answer should be 54. We have 10th question 24 जनवरी शिफ्ट 2 पर आया है. Lithium plus 2 transition where N1 plus N2 equal to 4 and the difference is 2. The wavelength is. So they said it N1 plus N2 जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो 4 है और इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा 2. वी आर एडिंग दिस तो हमारे पास 2N2 इज़ इक्वल टू 6 तो N2 इज़ इक्वल टू आ गया है 3. N2 इक्वल टू 3 और N1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1. वैल्यू अगर किसी भी एक इक्वेशन में डालोगे तो आंसर आएगा. नाउ सिंस उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वेवलेंथ पे सेंटीमीटर पे, तो हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय लेमडा इज़ इक्वल टू दैट इज़ RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर. RH की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर ही है. सो N1 की वैल्यू 1 स्क्वायर, N2 की वैल्यू 3 स्क्वायर एंड Z की वैल्यू हो गई है 3 का स्क्वायर. सो ऑन कैलकुलेशन आंसर अप्रॉक्सीमेट हमारा आ जा रहा है. दैट इज़ ये 9 माइनस 1 करके 8 बाय 9 इंटू 9 कैंसिल हो के इंटू 8 हो गया तो हमारा 877,416 सेंटीमीटर इन्वर्स आ गया. सो दैट 1 बाय लेमडा इज़ 1/1877416. तो इससे वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट आ रही है. तुम इसको 10 टू पावर -6 में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ 10 टू पावर -6. सो 1.14 इंटू 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर आ गया. दैट शुड बी आंसर. सो योर आंसर शुड बी बी. वी हैव क्वेश्चन 11 28 जनवरी शिफ्ट 1 पे आया है. आइडेंटिफाई बार्मर सीरीज सेट. देखो क्वेश्चन यहाँ अधूरा लिखा हुआ है तो मैं रीड आउट करती हूँ कि वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम are considered. Identify set of spectrum line belongs to the Balmer series.
बार्मर सीरीज़ के लिए हमें वेवलेंथ को मैच कराना है। तो बार्मर सीरीज़ का फर्स्ट लाइन जो होगा उसके लिए n1 इक्वल टू 2 एंड n2 इक्वल टू 3। सो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो 1 का ही डाल देते हैं, हाइड्रोजन के लिए ही पूछा गया है। सो 1 बाय लेमडा वैल्यू इज़ 5 RH बाय 36। मैच हो रहा है हमारे फोर्थ ऑप्शन से एंड सेकंड ऑप्शन से। एक और लाइन सेकंड लाइन भी मैच करा लेते हैं। सेकंड लाइन जो है उसके लिए बार्मर n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 शुड बी इज इक्वल टू 4। सो 1 अपॉन लेमडा आर एच 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुम रखोगे तो आंसर आ रहा है 3RH बाय 16। तो ये मैच हो गया। ओके, हमारा फोर्थ आंसर मैच हो रहा है। एक बार हम ये वाला और चेक कर लेते हैं। सो थर्ड लाइन के लिए n1 इज़ 2 एंड n2 शुड बी इज़ इक्वल टू 5। 2 से 3 फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन एंड देन थर्ड लाइन। सो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जा रहा है 21 R बाय 100। तो हमारा फोर्थ आंसर मैच हो चुका है। इजी क्वेश्चन था, ज़रूर करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें डायग्राम मिसिंग हो गया हमारे क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, द फोटोन ए लेमडा इज़ 400 एंड फोटोन बी द म्यू इज़ गिवन 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, मीन्स फ्रीक्वेंसी दी है। फोटोन सी के लिए 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज फोटोन वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो एनर्जी शुड बी इज इक्वल टू hc by lambda or else h mu. So for the photon A, that energy should be is equal to hc and lambda is given 400 nanometer means 10⁻⁹. For B के लिए we have a h mu, we will apply this. So h into 10⁻16 and for C के लिए that is centimeter inverse is given. So h c by lambda. So here in the C 1 by lambda value is given 10⁴ centimeter inverse. So h c into 10⁴ centimeter means 10⁻⁻2 meter to the power -1. Here we are getting 16, so we definitely have the higher one. This is 10⁻16 is pretty higher. Here we are getting, this is hc by 4 into 10⁻⁻7 and this 10⁻7 will go, still it is not equivalent to 16, so B is on the top. So B is on the top and then 10⁻7 is coming, that is A, and 10⁻6 is coming behind, that is C. So your answer should be 2. तुम कैलकुलेशन कर सकते थे लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर वैसे ही आ जाएगा। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 14, 28 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया है। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द जनवरी शिफ्ट। M1 इज़ अ 1 AMU एंड M2 इज़ 4 AMU एक्सेलरेट थ्रू द 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनका वेवलेंथ x टाइम्स ऑफ x2 है। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो वेवलेंथ दिया गया है उसकी क्वेश्चन बॉडी में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई थी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 is x times of λ2. So we have to find out the x value. So we will apply the de Broglie equation. That de Broglie equation is lambda is equal to h upon root of 2m ke kinetic energy. Since the kinetic energy is same 200 kilo electron volt, so we will write lambda for m1 and lambda for m2. That should be is equal to h upon root of 2m1 ke1 h upon root of 2m2 ke2. The kinetic energy means in terms of electron volt is same, the same volt is happening. Ke we are writing as a charge into voltage. So charge is the electron charge is same and voltage is a 200 kilo electron volt. So it's the same. Now h cancel, root 2 cancel, we will get it m2 by m1. Now m2 value is given 4 and m1 value is given 1. So we get it 2:1. So m1 should be is equal to 2 times of lambda m2. So your answer x value is 2 only. So these are your
एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन का लेवल सिंपल ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस सारे क्वेश्चन डुएबल थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो तुम कर नहीं सकते थे। और अगर इसको एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे रिट्स फार्मूला मीन्स बामर सीरीज़ और लेमन सीरीज़ से पूछे गए हैं, दीज सच टाइप ऑफ फार्मूला। तो ये वाला सेक्शन ज़रूर करना चाहिए। अभी अपकमिंग अप्रैल शिफ्ट के लिए भी चैप्टर को ठीक से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।